Assalamu alaikum dear students. I am Akhtar Ali Polo. Dear students, today we will study about equilibrium, types of equilibrium, states of equilibrium and conditions of equilibrium. So let's start our topics. First of all, equilibrium. Dear students, हम ऑब्जेक्ट्स को इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे कि when an object is at rest or moving with constant or uniform velocity, then it will be in the state of equilibrium. मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसे हम इक्विलिब्रियम में कहेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो उसे हम इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर सकते हैं. वाई वी कंसीडर इट इन इक्विलिब्रियम? बिकॉज all the forces acting on that body will become zero. So standing car, bus are considered in equilibrium, or a car moving with uniform velocity is also considered in equilibrium, because when an object moves with uniform velocity means it is in uniform motion, then it is also considered in equilibrium. Why it is considered in equilibrium? Because all the forces acting on that body will be zero. And motion of paratrooper is also considered as the example of equilibrium. अच्छा, means equilibrium में हम ऑब्जेक्ट्स को कब कंसीडर करेंगे? जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज विल बिकम ज़ीरो. इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज विल बिकम ज़ीरो, देन एक्सेलरेशन विल आल्सो बिकम ज़ीरो. वाई एक्सेलरेशन इज आल्सो बिकम ज़ीरो? बिकॉज एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फोर्स. हेयर the summation of forces is become zero. That's why acceleration is also zero. Now, types of equilibrium. Dear students, there are many types of equilibrium, but we will study some of them. The first one is static equilibrium. हम बॉडीज़ को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, मीन्स जब कोई बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, मीन्स रेस्ट की कंडीशन में हो, तो उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहेंगे. फॉर एग्जांपल, स्टैंडिंग बिल्डिंग, स्टैंडिंग बस, स्टैंडिंग पर्सन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. And second one is dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि when an object is moving with uniform or constant velocity, then it is said to be in dynamic equilibrium. Means जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और मोशन ऑफ पैराट्रूपर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. नाउ, states of equilibrium. Dear students, there are three states of equilibrium. These are stable equilibrium, unstable equilibrium,
एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी comes back towards its original position after slightly disturbing it, so that body will be in stable equilibrium। मीन्स जब किसी ऑब्जेक्ट को हम स्लाइटली चेंज करेंगे, स्लाइटली चेंज करने के बाद जब हम उसको लीव करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहली पोजीशन पे वापस आ जाएगा जिस पे वो पहले था, तो उस ऑब्जेक्ट को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। लुक एट हियर, ऑब्जेक्ट इज lying horizontally. When we will disturb it, then its center of gravity changes than its original position. But when we will leave it, then its center of gravity will come back towards its original position. Okay. Second one is unstable equilibrium। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डजंट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर स्लाइटली डिस्टर्बिंग इट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मीन्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्टर्ब करें और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आए, तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, व्हेन वी विल डिस्टर्ब इट, then its center of gravity will changes and never comes back towards its original position. Okay, now the third one state is neutral equilibrium। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी remains same, means doesn't change before and after disturbing it, then the body will be in neutral equilibrium। मीन्स जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज ना हो, मीन्स सेम रहे, तो उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, this is the spherical body, and when we will slightly disturb it, then its center of gravity never changes and will remain at same position जिस पे वो पहले था। So dear students, स्टेबल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हो तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर सकते हैं। और अनस्टेबल के एग्जांपल्स हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली प्लेस्ड हो तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कंसिडर कर सकते हैं। क्यों उसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कंसिडर करेंगे? बिकॉज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल नेवर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर स्लाइटली डिस्टर्ब इट। ओके, और जो स्फेरिकल शेप्ड बॉडीज़ हैं वो मोस्टली न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स कंसीडर्ड किए जाते हैं। नाउ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे
if the sum means summation of all the forces acting on a body is become zero, means acting along x-axis as well as y-axis is become zero, then first condition of equilibrium will be satisfied. मीन्स मैथमेटिकली हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको ऐसे डिनोट करेंगे कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बिकम ज़ीरो. Here sigma is a Greek symbol which denotes to summation, and F stands for force, means summation of all the forces will become zero. Means summation of all the forces acting along x-axis will become zero. The summation of forces acting along y-axis will become zero. The summation of forces acting along z-axis will also become zero. Then first condition of equilibrium will be satisfied. अच्छा, look at here in the figures. देखें कि y एक्सिस और x एक्सिस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. अपवर्ड y एक्सिस को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और डाउनवर्ड्स y एक्सिस को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और राइट हैंड साइड में x एक्सिस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड x एक्सिस को नेगेटिव कंसीडर करते हैं. तो जब हम x एक्सिस के फोर्सेस को और y एक्सिस के फोर्सेस को आपस में ऐड करवाएंगे तो उनका जो समेशन हमें ऑब्टेन होगा वो ज़ीरो होगा. तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होगी. अच्छा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ़ द अलजेब्रिक सम ऑफ all the torques which are acting on a body will become or will be zero, then second condition of equilibrium will be satisfied. Means summation of all the torques acting on a body will be zero, then second condition of equilibrium will be satisfied. Other words में second condition of equilibrium को हम ऐसे भी define कर सकते हैं कि if clockwise torques means summation of or sum of clockwise torques will be equal to the summation of counterclockwise or anti-clockwise torques, then second condition of equilibrium will also be satisfied. Dear students, when first condition of equilibrium will be satisfied, then we will call the body in translational equilibrium. But when second condition of equilibrium will be satisfied, then we will call the body in rotational equilibrium. So that's all about the equilibrium. For more lectures, please subscribe my YouTube channel and take care. Allah Hafiz.